Hello members, this is Aman from Upmove Stocks. We hope that you are doing well. So today we will be discussing a stock of another sector that had been identified by us in our best 5 sectors video for 2022. So today we will be discussing about Motherson Sumi, or you can say it Mother Sumi. It is an automotive components company. So we thought of covering it in today's video. We will be doing stock analysis. We will be discussing about the possible target that Motherson Sumi can show us in the near future. So let's start without wasting any further time. We have mentioned all the details, all the lines have been drawn in advance so that the video remains short and turns out to be more relevant to you. Also, we would request you to please not take any position on the base of this video or to exit from your current holding. Please consult your financial advisor before doing so that he or she can assist you in revising your stop losses and making you earn the desired return that you want to earn from this particular investment or this particular stock. Also, the targets that we calculate are based on simple technical patterns. There can be a lot of variations in them. So these variations need to be monitored on a day-to-day basis. However, our targets have been meeting in the past quite beautifully. You can see that for KPIT Technologies, and you can see that for Titan. You can see that for Birlasoft as well. So a lot of stocks have been hitting targets. HCL also, Infosys also. So however, these we monitor these stocks on a day-to-day basis so we can make the changes as and when needed. That is why we request you to consult your financial advisor before taking any investment or exiting decision. Further, we would request you to please watch the video till the end because it would help you to understand technical patterns, also make you aware about how technical analysts and other analysts make projections about a particular stock. When you hear about a stock in TV and they make certain kind of projections in that particular stock, so how they make that projection, you will be able to gain some knowledge about it if you watch the video till the end. If you watch the video only for the levels and only for the price related information, you will never be able to learn, and that is why a lot of retailers make losses in the stock market because they focus on price levels rather than on understanding the process behind arriving at those price levels. So without wasting further time, we will start with the stock analysis of Motherson Sumi. So you can see all the relevant information has already been mentioned. This stock has recently given a breakout of the double bottom pattern or W pattern. You can see the lines. It is a clear W. We are hovering over the pattern, so you will be able to see it clearly. These four blue lines. Okay, so this is the W pattern, or it is also known as double bottom pattern in technical analysis. So Motherson Sumi gave a breakout of this W pattern on 6th of January 2022. That is we believe on Thursday. Yes, 6th of January was, just a second, 6th of January was Thursday. So the breakout was given on 6th of January or Thursday of this month. After giving the breakout, the stock further moved up on 7th of January and made high of 241.40. However, it could not close at that level, but managed to close above the close of the previous day, which was 232.85, and the closure of Friday was at 238.90. So this stock is indicating a strong momentum. Why? Because with the increase in price, the volume is also getting higher, because you can see that on 6th of January, when the movement was by 8.75 rupees, the volume started increasing from the previous day. However, on 7th of January, even though the price increase was lesser than the price increase on Thursday, how this stock's volume was very high. You can see it was higher than the volume on 6th of January 2022. So the 7th January's price increase may not appear to be very high, but the volume is increasing. So it shows that there is some kind of interest in this particular stock. Also, the result season is on, so we might see some significant news or some momentum in this stock in the days to come. However, it is not guaranteed because it is a Nifty 50 stock, so there can be some kind of manipulation by the operators as well. They might be trying to take it up before the results, and then they might start selling it
when around the results or day before the result or on the day of result itself. So you need to be a little cautious. So please maintain your stop losses in advance after discussing with your financial advisor, because it has moved upwards. So your stop losses will also get revised on a day-to-day basis. Now, what the second part of this video is, where can Motherson Sumi go if it continues to hold this momentum that we have seen in past two trading days, that is on 6th of January and 7th of January. So the answer is very simple. Again, you will have to identify two values, the neckline value of the W pattern and the lowest value in the W pattern. So the neckline value is coming out to be 231.44. We have mentioned everything here, so you can just look at this box and get an idea of what levels we are talking about. So 231.44 is the neckline value, and lowest value of the W pattern is 196.10. This is this candle's lowest value. You can take 196.10. So we will have to calculate the difference between these two values, which is coming out to be 35.34 rupees. So we will again repeat that neckline value minus lowest value of the W pattern gives us the value of 35.34. Now we will have to add this value to the breakout level. So the breakout level, the breakout has occurred at a level of 231.44. That is the neckline value. So 231.44 plus 35.34 gives us a value of 266.78 or 267 rupees. So there is a possibility that we might see Motherson Sumi at a level of 267 rupees in the days to come. We have marked the upside with the help of this arrow. You can see this indicates the price target of 35.34. In other words, we can say that Motherson Sumi can give an upside of around 15.27% from the level of 231.44, not from the current level of 238 rupees at which it has closed on Friday. So again, we will repeat this. You will have to identify two different values, neckline value and the lowest value of the W pattern. So your neckline value is 231.44. Your lowest value is 196.10. Difference between the two is 35.34. When you will add this value to the neckline value of the double bottom pattern, this value, you can see you will arrive at the possible target of 266.78 or 267. So the next question that will come to your mind is, will it go to 267 in a single shot, or how many days it can take? It can take a few weeks or months maybe, because it has resistance at multiple levels. We have already identified the resistances. However, this resistance will now act as a support. This resistance 234.62 will act as a support now. After that, the next major support will be 231.4 for this neckline. Once our resistance is broken, it becomes the support for the stock. So this is a support now, and this will also act as a support now. It has also given a breakout above this line, which is around 238.58. However, it has only marginally closed above it. It has closed only by 30-40 points. So it can act as a resistance. Maybe if Motherson Sumi gaps up and opens above this, then it will act as a support rather than as a resistance. So the final resistance as of now that appears to be strong is a value of 241.53, from where Motherson Sumi retraced on Friday. It touched 241.53 and then it fell back to 238.90 at which it closed on Friday. So the possible target of Motherson Sumi is coming around to be 267 rupees or exactly 266.78, and if you will round it off, so it is coming around to be 267 around this level. This line it can go up to, but for Motherson Sumi it is not going to be an easy task, because it has resistances at multiple levels. It has resistance at 257 also, from where it fell last time. It had 255, 257. So it is not going to be a very easy task for Motherson Sumi until and unless we hear some excellent news about this particular stock in the days to come, or the results are beyond imagination, because it has strong resistance at multiple levels. Yes, once it crosses 257, then it will become unstoppable. Then it will surely hit 267, because there is no major resistance in this particular stock after 257. So you can take the immediate target to be around 257. If 257 is crossed, then 267 will surely come, because there is no resistance in the stock on the daily
charts. So this is a very important stock. A lot of people must be having this stock in their portfolios at different levels. Even we have this stock in our portfolio at a price of maybe around 221. So we are also monitoring this stock on a day-to-day basis. However, you should consult your financial advisor before exiting from the stock, or considering our price levels considering our price levels for decision making purposes. Please consult your financial advisor before taking a final decision. So the possible target is coming around to be 267. However, if Motherson Sumi manages to cross 257 decisively, then 267 is most likely to come in the days to come, because there is no major resistance after 257 258 levels in Motherson Sumi, and then we can see Motherson Sumi reaching a record high or maybe lifetime high. It can even cross 272, which is its lifetime high. So this was Motherson Sumi for you. A very simple analysis, a very good company, and a sector that has already been identified as that can provide better returns in the days to come as compared to the other sectors in the industry. So you can keep a watch on this stock, and if you're already holding this stock, then you can revise your stop losses after consulting your financial advisor. तो अब हम इस वीडियो को हिंदी में डिस्कस कर लेते हैं। तो मेंबर्स, यहाँ पर हम एक इंपॉर्टेंट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम मदरसन सुमी है। ये उन्हीं 5 सेक्टर्स में से एक सेक्टर का स्टॉक है जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया है, जो हमारे 5 बेस्ट सेक्टर्स हैं 2022 के लिए। तो उसमें से ये ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स में आता है, ऑटो एंड ऑटो एंसिलरीज में। तो एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत जानी मानी कंपनी है, और ये स्टॉक हमें लगता है कि काफी मेंबर्स के पोर्टफोलियो में भी ऑलरेडी होगा। तो इस स्टॉक में हम डिस्कस करेंगे कि स्टॉक आने वाले दिनों में कहाँ जा सकता है। तो इस स्टॉक ने 6 तारीख को डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दिया। ये जो आप देख रहे हैं 4 लाइंस जो हमने ज्वाइन की हुई है, ये डब्ल्यू पैटर्न है, इसको हम लोग डबल बॉटम पैटर्न भी बोलते हैं। तो इस स्टॉक ने 6 तारीख को इस डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, उसके ऊपर क्लोज किया, और फिर अगले दिन भी ये ऊपर ही गया। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब 6 तारीख को इसने ब्रेकआउट दिया तो वॉल्यूम अच्छा था, और सबसे अच्छी बात यह है कि इवन दो नेक्स्ट दिन वॉल्यूम में ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ एज कंपेयर टू 6 जनवरी, बट जो वॉल्यूम बार है वो बढ़ रहा है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं स्टॉक में बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों कैंडल्स स्ट्रॉन्ग है और वॉल्यूम बार भी नीचे बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम भी बढ़ रही है और प्राइस भी बढ़ रही है, तो एक अच्छा साइन होता है। बट अब आने वाले दिनों में मदरसन सुमी कहाँ जा सकता है, हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है, हमने पहले भी काफी बार डिस्कस किया हुआ है। आपको नेकलाइन वैल्यू लेनी है डब्ल्यू पैटर्न की, और लोएस्ट वैल्यू लेनी है पूरे डब्ल्यू पैटर्न की। तो नेकलाइन वैल्यू आपकी आ रही है 231.44, और लोएस्ट वैल्यू जो आ रही है वो इस कैंडल का आप लो ले लीजिए 196.10। हमने यहाँ पर सब कुछ लिख दिया ताकि आप इसको रेफर कर सकें। इन दोनों वैल्यूज का आप डिफरेंस लेंगे तो वो आ रहा है 35.34, और अगर आपको पॉसिबल टारगेट कैलकुलेट करना है तो आप इस नेकलाइन की वैल्यू में जो डिफरेंस आया है उसको ऐड कर देंगे। तो अगर आप देखेंगे तो नेकलाइन की वैल्यू 231.44 है, हमने पहले लिख दिया है, डिफरेंस आया 35.34। आप 35.34 को 231.44 में ऐड कर देंगे तो आपका जो पॉसिबल टारगेट है वो निकल कर आ रहा है 266.78 या फिर 267। तो ऐसा हो सकता है कि मदरसन सुमी हमें आने वाले दिनों में 267 के लेवल्स पर भी नजर आए। तो क्या ये एक ही बारी में ऐसे चला जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसको अलग अलग लेवल्स पर रेजिस्टेंस मिलेगी। अभी तो ये 241.53 से ही वापस आ गया था, जो कि फ्राइडे को उसने टच किया था 241.40, वहां से वापस घूम गया था। तो पहली रेजिस्टेंस तो यही होगी इसके लिए। पर आप एक चीज का ध्यान रख सकते हैं, जब जैसे ही मदरसन सुमी 257 के लेवल को तोड़ेगा, 257 258 के लेवल को तोड़ के उसके ऊपर रुक जाएगा, तो फिर 267 एकदम से आ सकता है, क्योंकि वहां पे कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है स्टॉक में। मतलब सिंगल शॉट भी मूव कर सकता है एक बार जब ये 257 या 258 के लेवल को क्रॉस कर देगा। तो 257 258 पे इसको रेजिस्टेंस आ सकती है काफी तगड़ी, क्योंकि ये बार बार वहां से गिर जाता है 255 257 258 की रेंज से। तो वहां पर ध्यान रख सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके अपने स्टॉप लॉसेस को रिवाइज कर सकते हैं, ताकि जो गेन्स आपको मिल रहे हैं वो आपको आपके
मतलब चले ना जाए, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के टच में रहें कॉन्स्टेंटली, और स्टॉप लॉसेस को ऊपर की तरफ मूव करते रहें जैसे जैसे ये ऊपर जाता जा रहा है। अभी के लिए जो इसका मेजर सपोर्ट आएगा वो एक तो होगा 234.62, और दूसरा जहां से इसने ब्रेकआउट दिया है वो है 231.44। तो जैसे ही इसको क्रॉस करके ऊपर बढ़ेगा फिर ये भी इसके लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अभी के लिए आप दो सपोर्ट ले सकते हैं, 234.62 और दूसरा 231.44। अभी ऊपर जो रेजिस्टेंस आएंगी वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, बट जो टारगेट अभी निकल के आ रहा है वो 267 268 का आ रहा है। एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जो उसको अभी आएगी 241 क्रॉस करने के बाद वो 245 होगी, 245 246, और फिर उसके बाद ये आएगा आपका अराउंड वही 245 246 की इसको मेजर रेजिस्टेंस आएगी। फिर ये हो सकता है कि एकदम से ऊपर मूव कर जाए, तो वो डे टू डे मॉनिटरिंग करनी होती है उसके लिए। तो हम इसके बारे में अपडेट तब देते हैं जब वो टारगेट मीट हो जाता है। इसलिए आप 257 258 इमीडिएट लेके चल सकते हैं, प्रोवाइडेड 246 247 को डिसाइसिवली तोड़ दे एक बार। और अगर 257 258 टूट गया तो फिर ये 267 श्योर शॉट जाएगा ही जाएगा, और उसके बाद हो सकता है अपने लाइफ टाइम हाई को भी ब्रेक कर दे। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इस वक्त अपने स्टॉप लॉसेस को ऊपर रिवाइज करना चाहिए जैसे से ऊपर मूव करता जा रहा है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की कंसल्टेशन के साथ, और स्टॉक को मॉनिटर करते रहना चाहिए, क्योंकि जहां से इसने ब्रेकआउट दिया वहां से ही अभी भी 15% रिटर्न दे सकता है। ऐसा ये बार आप देख रहे हैं, दिखा रहा है 35.34 रुपीज, 15.27% जहां से ब्रेकआउट आया है। तो ऑलरेडी ये उसके तो ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको और भी ऊपर नजर आए। बट सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो ये प्रॉब्लम है कि रिजल्ट सीजन शुरू हो चुका है, तो मदरसन सुमी का रिजल्ट जब आएगा तो हो सकता है कि उसके आसपास आपको इसमें थोड़ी पिटाई भी नजर आए, क्योंकि जब स्टॉक पहले ऊपर मूव कर जाता है तो ऐसा देखा गया कि स्टॉक की बाद में पिटाई होती है जब रिजल्ट आने वाला होता है, रिजल्ट आ चुका होता है, चाहे रिजल्ट अच्छा भी हो। तो थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना पड़ेगा। अब इसका रिजल्ट डेट निकाल के रख सकते हैं, उसके आसपास की मॉनिटरिंग शुरू कर सकते हैं। तो अगर आपको कुछ भी क्वेरीज कंसर्न्स या क्वेश्चंस हो तो प्लीज उनको कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उनका रिप्लाई जरूर करेंगे। हमने अपनी तरफ से जितना डिटेल्ड एनालिसिस हो सकता था वो कर दिया है, मतलब इससे ज्यादा तो फिर बहुत ज्यादा हमें टाइम लग जाएगा और उसमें वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। तो जितना रेलिवेंट इंफॉर्मेशन कम से कम टाइम में दे सकते थे वो आपको देने की कोशिश करिए। फिर भी अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस क्वेरीज या कंसर्न्स हो तो आप उनको कमेंट सेक्शन में डालिए, हम जल्दी से जल्दी उनका रिप्लाई करते हैं। और विद दिस मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।